Today, Amit Shah is arriving in Dibrugarh to dedicate several projects for the people of Dibrugarh. Now we can see that lakhs of people have gathered at the Khanikar Stadium, and uh, and the people are also going to Khanikar Stadium to hear Amit Shah, what Amit Shah say for the people of Dibrugarh. So today is a very historic moment for the people of Dibrugarh, that Dibrugarh is going to get a multi-disciplinary international stadium. So for the phase 1 stadium will be inaugurated by Union Home Minister Amit Shah, and Amit Shah will also lay the foundation stone of Assam Assembly, the second Assam Assembly, and Amit Shah will lay the foundation stone for the assembly building. And Amit Shah is also dedicates several projects for the people of Dibrugarh. Research center which is going to be set up at Dinjan will also be inaugurated today by Amit Shah. डिब्रूगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आपको पता होगा डिब्रूगढ़ द्वितीय राजधानी बनी है असम की, और उस राजधानी के अंतर्गत यहाँ आज असम विधानसभा का शिलान्यास, भूमि पूजन और एमएलए हॉस्टल का भूमि पूजन, और हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है उसमें पहले 5000 कैपेसिटी सीट की थी, आज उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 35000 तक ले गया है। तो सब मिला करके डिब्रूगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अतुलनीय दिन है, और इस खुशी में सारे डिब्रूगढ़ वासी पूरा आनंदित और आह्लादित है। और आने वाले दिनों में और विकास की पैगाम को हम लोग आगे लेके जाएंगे, और आदरणीय अमित शाह जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं डिब्रूगढ़ के पावन धरती पर, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह विकास की धारा अविरल डिब्रूगढ़ में बहती रहेगी और डिब्रूगढ़ भारत के मानचित्र पर एक अपना अलग आयाम स्थापित करेगा। इसी के साथ मैं पूरे डिब्रूगढ़ वासी को आह्वान करता हूं कि इस सभा में उपस्थित होकर इस सभा को सफल बनाएं, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का डिब्रूगढ़ के धरती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। And after 1 hour program in Dibrugarh, Amit Shah is going to Sarang Sapuri, it's in Dhemaji district, to participate in Missing Youth Festival. So our hub team, we are in Dibrugarh, show our viewers that how people are gathering here in the Khanikar Stadium to see the glimpse of Amit Shah and what Amit Shah say ahead of Assam Assembly election. This meeting, Amit Shah is very important ahead of Assam Assembly election, and everybody is hoping that what Amit Shah say, and Amit Shah will dedicate the projects, the development projects for the people of Dibrugarh. So I'm Avrik Chakravarti from Dibrugarh for Hub News. Nangni jangi tangani o sawo cherong bata nangni gisek ma thaneng de aga nonga prni chagate exercise karong bo de bagis te agan ska ondisa tusiko bo dao thaneng aga nenga gito komi chabo benan sengi donggen de bagis te jainga wa maman salanti bharata charunga mamu jade thaneng agan skainga knal mai ba dakaba sabisi ko mane mang chana mansran jajo de mailap nan thungsala tuchi chulet bo de bagis kan manija Chao de gumukon sagene chansia. Ansing gumukan masya. Ya to chini bakari ko agri chao de ansing be na namja. Ani ba mai dake? Ansing chansia chao ra ngara malasa malagen. Wagen. Angara film star aro Olympic kalag barungja. Ani ba to khari chini chani ko khumia chao de. High blood pressure, heart attack, stroke, diabetes, makron ka khumia ni, kharong te nostong ani. Yan ni jepong naman again. Aru yarang ni asel ning nekani rara ko man gen chani rangani mamu unja dia plak nang ni jangi tangani o gemakon nang chakya geno kenan nang ni kudu masir ka ba to di yan ansing nal thupatat geno to de nang ni tango sakselat po ha ansing ni salan tini chani o thoko komiat na ngode dalo ansing ndita chaiga ngode khasin sinu ko komiat po ha aru badita ba salang ni jamano aru untisa komiat khubo khari komiat na bi apsan kun jarak po bijak song muteng somayo khasinsin komiat na ranta karongbo aro salad doi ba bithera ngode khari kon sang nabe na cha baksa chinir ngama mamung ja rengai bo ndiba ata chamos komiat terengbo aro ate di sal zaman masi jokhon ba uni gaman chanchi bo
Nangni salantini janggi tanganio dek-dek prako sawa cienga. Nangni kari, chini, aru to chani ko ta aloni komiatna aba jengboha.